Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel. In this video, we are discussing class 10. We are discussing class 10 science chapter number 1. Sorry, that is chemical reactions and equations. Okay, so in this chapter, we are in this video we are covering question from page number 6. Okay, so page number 6. Then we have page number 10 and we have some question from page number 13. So we are covering these three questions. Okay. Now in first question, what is given? Question number 1. Why? Why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? So we have a magnesium strip known as magnesium ribbon. Okay. This magnesium ribbon when this magnesium ribbon when open in air it have reaction with oxygen and magnesium get covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a longer time. This layer hinders the burning of magnesium or this layer hinders means what? It may be slow down the burning of magnesium. Hence, it is to be clean before burning and we clean it with the help of a special sandpaper. Okay, you know sandpaper. Okay. So, it can be removed. Why? To get fast chemical reaction to stop hinders. Okay. Now, question number 2. Write balanced equation. Balance means what? Means what? Both side means here we have product or reactant. Here we have reactant and here we have product. So reactant side and product side, both side, the number of atom. It may be sodium, Na, it may be hydrogen, or whatever it may be. But the both side, the number of atom must be equal, and this is known as balanced chemical equation. Okay, so what we do? We have to do balanced chemical equation. Now, write the balanced equation for the following chemical reaction. Hydrogen plus chlorine. What is given? Hydrogen plus chlorine. Now, hydrogen gas can be written as H2. Hydrogen, chlorine can be written as Cl2. Here we write Cl, C capital, L small and 2 in subscript. Okay, so this is chlorine gas. Here hydrogen H capital and 2 in a subscript. Okay, hopefully you understood. Okay, this is how to write the name of chemical. Now, when hydrogen atom react with chlorine atom, it is having one atom and two molecules. It is also having one atom and two molecules. It produces two molecules of HCl, okay, hydrochloric acid. Now we have second barium chloride. What? Barium. Barium chloride can be written as 3BaCl2. 3, no, it's written as BaCl2. 3, we have to add to balance it. Okay. Now aluminium sulfate Al2SO4 thrice. Al2SO4 thrice. When it reacts BaCl2 plus Al2SO4 thrice, they react to produce BaSO4 barium sulfate plus aluminum chloride. Now, as we have how much SO4? 3 SO4 here, and here we have only one SO4. Okay, so we have to balance it.
We have to balance it. So what we have to do? We have to write BaCl2 plus Al2 SO4 thrice. They react to produce BaSO4. But here we have 3. So we have to write 3 here. Where? Here. I forgot to write this. So we have to write 3 here. Okay. 3 BaSO4 plus what? AlCl3. AlCl3. If I write Al2 here, okay, then Cl must be 6, so I have to write 3 here. So 3 BaCl2 plus Al2SO4 thrice, it produces 3 BaSO4 plus 2 AlCl3. Okay, hopefully you understood. Here, what I forgot to write 3. Where? We have to discuss where we have. I forgot to write it here. Okay. Where? Here. In this place, we have to write 3. Okay. If I can, uh, this allow me to write. I have to write 3 here. Where? Okay. 3. Okay. The 3 BS of 4. So here also 3, and I have to put one space here. Okay, okay, 3 BSO4. Now, third one, sodium plus water. Sodium is very explosive. It can make a blast. So sodium means Na. Water means H2O. It produces sodium hydroxide plus hydrogen. It releases hydrogen gas. So okay, this is hydrogen gas release. NaOH, sodium hydroxide. Now Na2. Okay, so we have two oxygen, hydrogen, 4 hydrogen. Okay, so we have balance equation. This is also balance. All three are balanced. Sodium means Na, water means H2O. Na plus H2O produce NaOH and release hydrogen gas. Okay, so if you are newer, okay, not I am also newer. So please subscribe my channel. So we will meet every day and I will give you all support for your class 10. Not for only science but also for maths also. Okay. Please subscribe my channel and share with your friend. If you like this video, please hit the button, like button, and also hit that bell button that you can have regular update of this channel. Okay. Now question number 3. What is question number 3? Write a balance. Write a balanced chemical equation with state symbol. State symbol means what? It may be gas, it may be solid, it may be liquid, it may be aqueous. Aqueous means water solution. If I put some sodium into water, it produces NaOH and this is known as aqueous solution. Write a balanced chemical equation for the following reaction. First, solution of barium chloride, BaCl2, barium chloride, and sodium sulfate, sodium Na2SO4 in water. React to give insoluble barium sulfate, BaSO4 solid, and solution of sodium chloride, NaCl. Okay, so we have BaCl2. BaCl2 means barium chloride. Barium chloride. When react with Na2SO4 and sodium sulfate, it produces BaSO4, barium sulfate, BaSO4, and NaCl, sodium chloride. Okay. Now BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous, it produces BaSO4 solid. Why solid? It is given insoluble barium sulfate insoluble. Insoluble means that is in solid state, insoluble. BaSO4 solid plus NaCl. Now
We have 2 Na, so we have to put 2 here. So produce 2 NaCl, Cl2, Cl2, 2 into Cl means Cl2, SO4 1, SO4 1, Ba1, Ba1, so it is balanced. Okay. Now, now in second question, we are, what is second question? Second question is sodium hydroxide solution in water. Sodium hydroxide NaOH solution in water react with hydrochloric acid. Hydrochloric acid means HCl. It produces NaCl. It produces sodium chloride and water. So it produces NaCl and water. Sodium hydroxide NaOH. Aqueous means we prepare it by adding in water. HCl aqueous means hydrochloric acid in water. NaCl aqueous plus H2O. Here H2O is a liquid. Okay. It is not aqueous, it is liquid. Now, hopefully you understand all three questions. Okay. Now we have question from page number 10. Okay. Question from page number 10. Question number 1. A solution of substance X. Very, very important for the board point of view. बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. क्या है? A solution of substance X is used for white washing. White washing. चुना लगाने की काम आता है. Name the substance X and write its formula. And write its formula. Write the reaction of the substance X named in one above with water. तो वाटर के साथ ये क्या रिएक्ट करेगा ये भी आपको लिखना है. तो आंसर क्या है? द नेम ऑफ द सब्सटेंस used for white washing is calcium oxide or quicklime. कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड दिमाग में बिठा तो ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड. उसका लोकल नेम क्या है? क्विकलाइम. उसका फॉर्मूला क्या है? CaO. क्या है? CaO. अब दूसरा क्या पूछा है? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स. ओके. वन अबव विथ वाटर. ओके. तो ये जो है वो क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम. इसको अगर पानी के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसका नाम क्या है? स्लेक लाइम. क्या उसका नाम है? स्लेक लाइम. क्या नाम है? स्लेक लाइम. ओके. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है. अब इसके आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in textbook activity 1.7, that is electrolysis of water, double the amount of collected in other. Name the gas. क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि हम पानी के साथ में दो इलेक्ट्रोड को रखते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, और उसके साथ उसमें हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं. बैटरी मीन्स हम कोई बैटरी जैसे कनेक्ट करते हैं. क्या होता है? करंट अंदर जाता है. यहाँ पे ऑक्सीजन O2, यहाँ पे H2 रिलीज होता है. तो कौन सा गैस ज्यादा रिलीज होता है? डबल. और कौन सा आधा यानी कि कम रिलीज होता है? ये पूछा गया है हमसे. तो क्या बोल रखेंगे हम? वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव हाइड्रोजन गैस at one electrode and oxygen O2 gas at another electrode. Two molecules of H2O liquid when electrolyzed produce 2H2 gas plus O2 gas. Thus, two molecules of water on electrolysis give two molecules of hydrogen gas and one molecule of oxygen gas, or in other words, the amount of hydrogen is collected would be double than the oxygen gas. हाइड्रोजन गैस कितना है वो कितना होगा? ऑक्सीजन से डबल होगा. ठीक है. Okay, hopefully you understood. Now, from page number 13. From page number 13. So, first question is, why does color of copper oxide
ये कॉपर CuSO4 क्या बात है, कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयन नेल इज डिप्ड इन इट। जब हम आयन नेल को अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, देखो हमने क्या लिया है, हमने एक ऐसा बड़ा सा टेस्ट ट्यूब लिया है जिसके अंदर यहाँ CuSO4 सॉल्यूशन भर दिया है, जिसके अंदर हमने एक खीली डाल दी, खीली यानी लोहे की वो कील आती है ना, वो हमने डाल दी। अब क्या होगा, तो लोहे की कील है ना वो CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगी, कॉपर नीचे बैठ जाएगा और Fe सॉल्यूशन में चला जाएगा। ओके, तो ये वापस लिखना है, ये हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं वर्ड में कैसे लिखेंगे। ओके, इसकी जगह दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, इन आयन नेल इज dipped in a solution of copper sulfate for 30 minutes. State the change in color observed. Give the reason for the change. Okay, answer क्या है? When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, the displacement reaction takes place. क्या होता है? Displacement. SO4 का displacement CuSO4 से FeSO4 बन जाएगा. The color of copper sulfate solution fade due to the formation of light green solution of iron sulfate. कॉपर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू कलर का। अब कलर कैसा हो जाएगा, तो अब कलर हो जाएगा ग्रीनिश, कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश। तो ये कैसा कलर है, पहले ब्लू, CuSO4 का ब्लू कलर है, जैसे आयन के साथ रिएक्ट होगा FeSO4 बनेगा जो ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन है, और कॉपर नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टूड। प्लीज लाइक शेयर तो कीजिए। ओके, now we have question number 2. So we have question number 2 and 3 both here. We have question number 2. Question 2, give an example of double displacement. ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन द एक्टिविटी, और हमको डबल डिस्प्लेसमेंट का बोला है तो क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl react with hydrochloric acid, it produce NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। ये क्या हो गया, और ये आपको कितने मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो भाई आप कोई 2 या 1 रिएक्शन दीजिए किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड and the substance which are reduced in the following reaction। पहला है Na, sodium plus oxygen produce Na2O, it is 4 number of sodium atom when react with one molecule of O2 gas, it produce Na2O, how much, 2 Na2O, sodium oxide। और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज सोडियम, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसके लिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। whereas oxygen is reduced, oxygen is reduced, sodium as a gainer of oxygen and oxygen is reduced। सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम का ऑक्सीजन ऐड हुआ, ओके, जबकि ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। अब है CuO, कॉपर ऑक्साइड, क्या है, CuO when react with hydrogen it produce Cu plus H2O। तो यहाँ कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यानी क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर इज द सब्सटेंस रिड्यूस इज कॉपर एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एज एन ऑक्सीजन गेनर और गेन ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ हम हमारा जो वीडियो है आज का खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, thank you so much and please subscribe my channel for further information। please hit the bell icon and ठीक है, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।